Well, this has been a marvelous read, and I'm sitting here with the architect of this brilliant book. I'm sitting with Sir Imtiaz Rafi Butt. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. So, sir, I have a few questions to ask you, if you don't mind. So, the first question is, what is Jinnah Rafi Foundation, and where did you get the inspiration from it? Jinnah Rafi Foundation was formed by me about 28 years back. And that was the time I was 40 years old, and I retired from the active business. And I wanted to search for my father, who had died when I was 2 months old. And I never knew about him, except what little my mother told me about him. So when I researched on my father, and from the research of my father, it took me to Jinnah, Quaid-e-Azam, because my father was a close associate of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And he was one of the leading Muslim industrialists and the first Muslim banker in India. So he formed Central Exchange Bank in 1936, whereas Habib Bank was founded in 1942. So my father was a very talented man, very ambitious and very devoted to the Muslim cause behind Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And that's the love that Jinnah had for my father too. So researching on my father, which I wanted to know how he is, how he lived his life, what was his objectives, my father became my role model. My father became my hero. So after looking for my father, my search for my father took me to Muhammad Ali Jinnah. And through that research, I researched on Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and was amazed to find that there is no leader in the world equal to Jinnah. The kind of qualities Jinnah had, the kind of achievements Quaid-e-Azam did for us, and it was only Jinnah who got us this country. And while researching on Jinnah, I found love for Pakistan. So my whole path changed from just being a businessman who just is wanting to expand his money and business towards Pakistan movement and towards understanding this country. कि ये मुल्क है क्या, and how did we get it? I must mention that very few countries in the world have sacrificed so much for the independence as much as Muslims of subcontinent did. 1 million people died and were slaughtered in the partition. And Lahore and Punjab was the real area where the blunt was, because there was a divide among Muslims and Hindus and Sikhs who lived for thousands of years together. And there one day a British lawyer comes, which is known as Clifton, and he draws a line of partition, and that's where the where riots took place in Lahore, and buildings were burned. Rang Mahal was totally burnt. So it was Jinnah who got us Pakistan, and very few people, especially of the new generation, can realize the sacrifices that their forefathers gave to get this country. I completely agree. It's been a very difficult journey for all Pakistanis to actually achieve this nation that it is. So my second question is basically, can you tell us about the book Qaid Service? Yes. When I started research on my father, and I found letters between my father and Quaid-e-Azam in the archives of Islamabad, and it was amazing for me. First time I'm seeing my father writing to Jinnah and talking to Jinnah through his letters, and it was a very fascinating journey for me. And then I hired one of the best researchers that was available in Pakistan, and then Sayyid Razi Wasti, who is a history icon, and Columbia University, America, mein, on Qaid's seat he was there. So he wrote this book at Qaid Service with 7 years of research that our research team did, and this book creates India and Punjab and Lahore in particular of 30s and 40s era. Totally. How many Muslims were there,
how many shops were there, how many factories were there in Punjab, who were the leaders at that time, and among Hindus, Muslims, and Sikhs, and Muslims were very down at that time compared to Hindus, and Rafi Bhatt was one figure which was amazingly rising at his times. So this book recreates Lahore of 30s and 40s and the struggle of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in the 40s. अच्छा, कायदे आज़म का तो हमने काफ़ी सुना है और हर बच्चा उनको जानता है, सीखते भी हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर सब कुछ, लेकिन हाउ क्लोज, कितने करीब थे आपके फादर उनसे? मैं ये कहूँगा, आप अगर ये ख़त पढ़ लें इस किताब में जो आपने पढ़े हैं, तो वो ख़त बताते हैं कि हाउ क्लोज रफ़ी भट्ट वाज विद जिन्ना। एंड लोग तो कायद-ए-आज़म को दूर से देखने को तरसते थे। जब मैंने रिसर्च की और मुमताज़ दौलताना और सरदार शौकत याद जो उस वक़्त के लीडर्स थे, उनसे मैंने बात की और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए, तो उनके अल्फाज ये थे कि हम तरसते थे कि कायद हमें एक मिनट दे दे कि हम कायद से कोई बात कर लें, और रफ़ी भट्ट के लिए कायद इंतज़ार कर रहा होता था। और ख़तों में नज़र आता है कि हाउ मच कायद saw the potential in this young man, and उसमें कायद-ए-आज़म को रफ़ी भट्ट अपने सजेशंस देता है, फिर हर चीज़ कायद-ए-आज़म से वेट कराता है। एंड देन पाकिस्तान टाइम्स जो अखबार था, कायद की ख्वाहिश पे रफ़ी भट्ट ने फाइनेंस भी किया, बनाया भी, इनॉग्रेट भी किया। और मतलब मैं ये समझता हूँ कि उस ज़माने में बहुत कम मुसलमान थे जो इतने एडवांस स्टेज पे थे जितना रफ़ी भट्ट था। दो ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज ऑलमोस्ट हाफ द एज ऑफ जिन्ना, बिकॉज रफ़ी भट्ट डाइड इन एन एयर क्रैश एट द एज ऑफ 39 and 2 months after Qaid died. So they were, I mean, Rafi Bhatt was very close to Jinnah, and Qaid-e-Azam responded to Rafi Bhatt a lot. यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम जो प्लानिंग कमेटी थी उसके भी चेयरमैन रफ़ी भट्ट को उन्होंने बनाया, मेटलर्जी और स्टील का। तो रफ़ी भट्ट के ज़िम्मे था जब पाकिस्तान बनेगा तो रफ़ी भट्ट ने इकोनॉमिक साइड मुसलमानों की, पाकिस्तान की लेकर चलनी है आगे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के एक साल बाद कायद-ए-आज़म डाइज 11 September 48. 2 months later, Rafi Bhatt's air crash takes place over Vehari, and the story ends there. And nothing was written, nothing was said in our history about Rafi Bhatt's contribution to Pakistan and to Jinnah, because Rafi Bhatt did not fight any elections. इलेक्शन क्लास में नहीं थे, वो तो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एंड फार साइटेड। एट दैट टाइम ही हैड ऑफिसेज इन न्यूयॉर्क, एट दैट टाइम जब पाकिस्तान में कोई निकलता ही नहीं था। तो सो कायद-ए-आज़म सॉ दैट स्पार्क इन दिस मैन, एंड दैट आल्सो प्रूव्स कि जिन्ना कितना ज़्यादा टैलेंट को पहचानता था और उनसे उनको आगे लाते थे। ये सही बात है कि वो इतना ट्रस्ट रखते थे, उनको नजर आता था कि ये पोटेंशियल है इसमें और वो आगे उसको लेना। बट द सैड पार्ट इज दैट हिस्ट्री नेवर कवर्ड रफ़ी भट्ट। दैट वाज द सैड पार्ट। 28 years back when I got these letters and My Dear Qaid-e-Azam was the book first launched, written again, edited and written by Sayyid Razi Wasti, and Prime Minister Benazir Bhutto as the Prime Minister came and launched that book. That's the first time that Rafi Bhatt got recognition in the founding fathers of this country. And as a son, I took it my duty, and even today I take it as my duty, that it is my duty to highlight the achievements of my father, who sacrificed so much for making this country. And so that's my passion, and that's my duty also. And I can definitely say that, you know, like father, like son. That's my definitely passion and my duty. Exactly. So to what extent do you actually feel that this book can impact the general masses or the youth of Pakistan? देखिए, हम 28 साल से हर नेशनल डे
सेलिब्रेट करते हैं जिना रफ़ी फाउंडेशन, लाइक 23rd March, 14th August, कायद की बर्थडे, 25th December, and all those national days. And for 28 years I'm doing that, and we get large crowd of friends and people and educate them on Pakistan movement, because Pakistan movement हुई थी तो पाकिस्तान बना था और उसमें कायद is the main figure, and we try to spread that message to the younger generations now, and I'm so glad that you are interviewing me of a younger generation. तो अब ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है to support us, to join us and spread the message of Jinnah, because आज के पाकिस्तान को आपने कहीं भी आगे ले जाना है तो ब्लूप्रिंट आपके पास पड़ा हुआ है. कायदे आज़म was very clear 70-80 years back where Pakistan's geographical location is, what's future of Pakistan, and he at that time said that Pakistan is going to be a great country. He could see the geographical location, और आज Pakistan is being recognized as a important country of the world. So my biggest desire and Jinnah Rafi Foundation's desire is कि नई नस्ल को फाउंडिंग फादर्स का कंट्रीब्यूशंस कि पाकिस्तान बना कैसे था, बना क्यों था, टू नेशन थ्योरी पे था, जो लॉन्ग मार्शल लॉज ने स्मज किया और कंफ्यूज किया लोगों को, वो कंफ्यूजन निकाली जाए. दूसरी चीज़ मैं बताऊं आपको, तारीख जो होती है हिस्ट्री रीराइट होती है. हिस्ट्री जिस हुक्मरान के वक्त में लिखी जाए उसके इन्फ्लुएंस के साथ लिखी जाती है. जब वो हुक्मरान ख़त्म हो जाए रीराइट होती है तो उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता. मींस जब अयूब खान था पाकिस्तान में तो जो भी हिस्टोरियंस ने जब हिस्ट्री लिखी तो अयूब खान की गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस था कि इतना तुमने लिखना, इतना नहीं लिखना. बट आज कोई भी हिस्टोरियन लिख सकता है उस पीरियड के बारे. सो मोर ओपन. सो वी हैव रीरिटन and are rewriting the Pakistan movement and the importance of Pakistan movement. The importance of Sir Rafi Bhatt in the entire movement as well, and which you have worked so well to bring to light through this beautiful book. So another question that I have is that can you please tell us if your father was here, अगर आपके अबू अभी जिंदा होते और आपको देख रहे होते कि आप किस मकाम पे हैं तो वो कितना प्राउड फील करेंगे? देखें ये तस्वीरें सब रफ़ी भट्ट की हैं एंड 28 साल से मेरे दफ्तर में भी लगी हुई हैं और मेरे घर में भी लगी हुई हैं. एंड लिटरली आई हैव बीन लिविंग विद दिस मैन एंड रिसर्चिंग ऑन हिम, फाइंडिंग हिम मोर एंड मोर, एंड आई हैव बीन लिविंग विद हिम. आई थिंक इफ ही वाज अलाइव टुडे he would be proud that he has a good son and who is doing his duty, और मैंने एज अ ड्यूटी समझा. एंड मेरी अचीवमेंट बिजनेस की मैं नहीं गिनता, मेरी कोई अचीवमेंट्स को मैं नहीं गिनता. मैं अपनी अचीवमेंट एक को गिनता हूँ कि पुटिंग रफ़ी भट्ट इन हिस्ट्री विच आई डिड एंड रिकंस्ट्रक्टिंग हिम फॉर माई सेल्फ टू नो what kind of a man he was. And he was a very, very tall and very talented young man. Did you ever expect कि वो ऐसे होंगे जब आप मतलब obviously you didn't know him and you got to know whatever you little did from your mother, तो आपने कभी सोचा था कि वो इतने अमेजिंग आदमी होंगे? नहीं, मैंने वो कन्फ्यूजन थी. माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि ही वाज अ ग्रेट मैन. माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि सैयद गुल सैगल उस वक्त का बिजनेसमैन था, दौलताना थे, पॉलिटिशियंस, इफ्तिखार ममडूद थे, वो रफ़ी भट्ट के पीछे उनके घर आ रहे होते थे. बट मैं चाइल्डहुड में समझ नहीं सका. आई थॉट शी इज एज अ वाइफ इज जस्ट overdoing it and oversaying that. So मैं ये नहीं बिलीव करता था, बट सुनता रहता था और वो सुनने के साथ मुझे अंदाज़ा होता जा रहा था, बट ये अंदाज़ा नहीं था. बट यकीन करें जब मैंने रिसर्च की एंड आफ्टर बाय एज ऑफ 40, तो जब मैंने रफ़ी भट्ट को इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा तो मैं डिस्टर्ब हो गया कि हाउ कुड अ मैन अचीव सो मच इन सच अ शॉर्ट पीरियड. बिकॉज मैंने भी लाइफ में अपनी हम्बल वे में बहुत अचीवमेंट्स की. बाय द एज ऑफ 30 फ्रॉम ज़ीरो आई वाज अ रिच मैन. तो बट जब मैंने रफ़ी भट्ट की अचीवमेंट्स देखी तो आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज. और ऐसे लोग सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं और ही वाज वन ऑफ देम. एंड हिज photographs, if you look at them,
are a living memory of his activities of that time. Do you ever compare yourself with him? कभी होता है कि आप सोचते हैं मैं इस तरीके का हूँ या नहीं हूँ? मेरा ख्याल है कंपेयर मैं नहीं कर सकता बिकॉज वो मेरा हीरो है, ये भी है। तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मैं अगर उनको फॉलो ही कर लूँ जो जो तो वही वो काफ़ी है। करते रहे तो वो भी बहुत है, बिकॉज ही वॉज एक्सेप्शनल, ही वॉज एक्सेप्शनल। लेट मी रिपीट, 16 ईयर्स एज पे उनके फादर फौत होते हैं, रफ़ी भट्ट के। एट एक छोटा सा अनारकली में एक कारखाना था, 6 बंदों का काम करता, और रफ़ी भट्ट टेक ओवर करता है। बाय द एज ऑफ 24 रफ़ी भट्ट मेक्स द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ सर्जिकल्स इन इंडिया, फिरोजपुर रोड पे ऑपोजिट गद्दाफी स्टेडियम जो गार्डन टाउन है वहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी, लार्जेस्ट इन इंडिया। एट द एज ऑफ 27 रफ़ी भट्ट मेक्स अ बैंक, Central Exchange Bank, first Muslim bank in India, with branches all over India, Calcutta, Delhi, Bombay, Lahore. 27 साल का लड़का उस जमाने का, 31 years age he runs into Jinnah, and then Jinnah picks him up, and after 31 years age he joins Jinnah for Pakistan movement. पंजाब में गवर्नमेंट यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी, सर सिकंदर हयात की गवर्नमेंट थी जो एंटी जिना थी, एंटी मुस्लिम लीग थी, और रफ़ी भट्ट लाहौर में रह के कायद आज़म को सपोर्ट कर रहा है। इट वॉज हिज करेज, एंड देन एट दैट टाइम ही इज ओपनिंग अप हिज ऑफिसेज इन न्यूयॉर्क, एंड विथ फोर्ड्स एंड हेनरी अमेरिका के बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे मिल रहा है। So he was an amazing man in his own right. तारीख में ये देखा है कि सदियों में कोई ऐसे पैदा होते हैं लोग जो इतनी अचीवमेंट्स करते हैं। He just had a very short life, 39 years age, and he died. Had he lived longer, कायद की ड्रीम को भी वो लेकर चलते, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डायरेक्शन को भी वो लेकर चलते, बट ये तो खुदा की मर्जी थी। एंड I was just 2 months old when he died, and I was born in a rich father's house, but after 2 months we became a mediocre family because everything was lost in the process. Things went bankrupt, and चीज़ें बैठ की जब when he was not alive, so then I lived a mediocre life, and then I had that spirit in me. My mother kept telling me about how the man was, and he was kind of your motivation and idol, and that made me achieve whatever I wanted to achieve, and I did achieve. They say that even when your parents leave, they still have this strong presence. And Yeah, I feel its presence. I feel its presence. And I'm sure आप उनसे काफी लगा होगा. I feel its presence. The last few questions that I have is, what is your opinion on the current affairs of Pakistan, the current political situation? क्योंकि काफ़ी chaos है, youth पे काफ़ी effect आ रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत confusion है, तो आपका उस पे क्या? देखिए जी, वाकई बहुत confusion है। उर्दू पंजाबी में कहूँगा अंधेरा पड़ा हुआ है, इसमें और अंधेरा पड़ेगा और रोशनी निकलेगी। तो अब इस वक्त अंधेरा है और अंधेरा आएगा in few months, और फिर रोशनी निकलेगी, because चीज़ें have to become better। तो इस वक्त मुझे जो बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूँ मुस्लिम लीगों को, जो भी मुस्लिम लीग्स हैं, हम कायद की मुस्लिम लीग हैं और वो फॉलो नहीं कर रहे। I mean, मुझे वो चीज़ अजीब लगती है, कायद की तस्वर या गाइडेंस क्या, और इन मुस्लिम लीगों की बातें क्या, तो वो दुख देती है मुझे। तो मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़े अच्छे वक्त से गुजर रहा है इंटरनेशनली। पाकिस्तान, चाइना को पाकिस्तान की बेपनाह ज़रूरत पड़ गई है, बिकॉज चाइना नीड्स टू एक्सपैंड एंड हैव इट्स इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो साउथ चाइना सी है उस पर उसके 5-6 मुल्कों के साथ झगड़े हैं, एंड ब्लॉकेड्स भी वहाँ से होंगी। तो उसने ग्वादर को पिक किया, तो जब ग्वादर को पिक किया तो $47 बिलियन की प्रॉमिस की शी ने, प्रेसिडेंट चाइना ने, अबाउट अ ईयर बैक, और ग्वादर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और
और इलेक्ट्रिसिटी पे बेपनाह काम हो रहा है। तो इस मुल्क में 50-60 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मैं बड़ा श्योर हूँ कि हमारी जो पुअर क्लास है वो मिडिल क्लास में डेवलप होगी, और जिस मुल्क की बड़ी मिडिल क्लास हो जाए वो मुल्क प्रॉस्पर करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वी हैव अ ग्रेट प्रेजेंस, अ ग्रेट फ्यूचर बिकॉज ऑफ अ जियोग्राफिकल लोकेशन। हमें मार पड़ी, उसी का हमें फ़ायदा मिला कि चाइना को हमारी ज़रूरत है, एंड चाइना इज़ कमिंग अप इन अ बिग वे एंड लिफ्टिंग पाकिस्तान अप। सो उस हवाले से तो ठीक है। अभी ये जो पॉलिटिकली टर्मोइल हुआ है, आई होप इट सेटल्स सूनर, और मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी सी और अंधेरा पड़ेगा और रोशनी निकलेगी। थिंग्स विल सेटल डाउन बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट मूव दिस वे। इस वक्त तो बहुत हाई पे पार्टीज ब्लो अप कर रही है ना, तो ये कूल डाउन होगा, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड ऑब्वियसली द यूथ का भी बहुत बड़ा है इसके अंदर पार्ट होगा, उनको रोल करना। हमारे यूथ से बेचारे से बड़ी जाती होती रही। मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो लाहौर, पाकिस्तान एंड लाहौर वाज क्वाइट वेस्टर्नाइज्ड, क्योंकि ब्रिटिश होते थे। एग्जैक्टली। तो जब ज़ियाउल हक आया तो वो इस्लाम ले आया, तो हमें समझ ही नहीं आई, वो उल्टा दिया उसने सारा कुछ। फिर स्कूल में पहले अंग्रेज़ी होती थी, फिर उर्दू कंपलसरी कर दी, फिर अंग्रेज़ी कंपलसरी हो गई। तो दैट वाज द सैड पार्ट दैट वी वर फॉलोइंग। तो यूथ कंफ्यूज रहा पाकिस्तान का, बिकॉज पाकिस्तान में मार्शल लॉज भी 4 आई। पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू अ लॉट, 4 मार्शल लॉज, ब्रेकिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्ट पाकिस्तान टूट गया, फिर 3 जंगें, 3 wars, then your populist leader being hanged, Bhutto hanged. I mean, Pakistan has gone through a lot, but good time has come for Pakistan because of CPEC. और मैं तो बहुत दोस्तों को कहता हूँ कि CPEC में इन्वेस्टमेंट्स करो। चलो, हमने एज अ रफ़ी ग्रुप ग्वादर में ग्रीन पाम बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम बनाई है और बन रही है। वी हैव हैड अ ग्रेट रिस्पॉन्स, and I would always tell my friends, business people, that you cannot go wrong. Go to Gwadar, go to CPEC, get into CPEC business, promote that. पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। ये अपॉर्चुनिटीज दोबारा नहीं मिलती। Obviously, जी। My final question is going to be in regards to what is the message जो आप पैगाम देना चाहते हैं to the youth of Pakistan for 14th August, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे अब आने वाला है, करीब आ रहा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस चीज़ को फॉलो करें? देखें, आज ट्रंप है अमेरिका का प्रेसिडेंट, और लोग आज अमेरिका में अपने फाउंडिंग फादर्स को याद कर रहे हैं कि आप फाउंडिंग फादर्स के मुताबिक ट्रंप नहीं चल रहा। फाउंडिंग फादर्स जो होते हैं, फॉलो देम। और हमारा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है फाउंडिंग फादर, और उसके साथी ब्लूप्रिंट वहाँ पे है। नई जनरेशन शुड फील प्राउड ऑफ द फॉर्मर लीडर्स, दो दे आर क्वाइट अशेम्ड ऑफ देयर टुडेज लीडर्स, जो लेटेस्ट लीडर्स हैं। बट आई थिंक लीडरशिप भी नई आएगी, बेहतर लोग होंगे, पॉजिटिव रखा जाए। और दूसरी चीज़ है कि जितना टीवी पे हम देखते हैं नेगेटिविटी पाकिस्तान के बारे में, इतनी मैंने तो किसी मुल्क में कोई टीवी को इतना नेगेटिव बात करते नहीं देखा। आप टीवी ऑन करें तो नेगेटिव सारा कुछ, जो हमारे कंट्री के लोग हैं वही कंट्री को क्रिटिसाइज और बुरा कहते हैं। मैं कहूँगा कि ग्लास हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी देखता है, तो पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। और ये मुल्क अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला ने बचाया, और अल्लाह ताला आप पे मेहरबान है इस वक्त। और मैं आपकी जनरेशन को देख रहा हूँ फ्लरिश करते और बेहतर इस पाकिस्तान को ले जाते। जी, बहुत शुक्रिया। हमने यही देखा है कि कितना इनका पॉजिटिव मैसेज था। एंड रिगार्डिंग द बुक एट काइट सर्विस, इट्स एन अमेजिंग बुक, ठीक है। बहुत इसके अंदर इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन जिसने पाकिस्तान के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया और उनके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है।
तो इस बात का काफ़ी दुख होता है हम सबको. And I am so lucky to sit here and take My an interview pleasure. with you, Mr. My pleasure. Imtiaz. And इंशाल्लाह फिर हम आपको पुश करते हैं, आपको परसुएड करते हैं कि आप प्लीज़ ये बुक रीड करें and the youth step forward to actually take this nation somewhere great. Thank you so much.